Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial, part 13, we have seen interaction between the visuals. When there are multiple visuals on one page, visuals interact with each other and we can edit them also. Now, today is our tutorial part 14 and we are going to create line chart and area chart. So let's start our tutorial. To create a line chart visual, I have opened here a new page and I am adding a line chart visual on the canvas. So click here on the line chart. Now, to build this visual, we need to add the data on x-axis, y-axis, and there is one more new option, that is the secondary y-axis, and legend we have seen before. So I am adding date field on the x-axis. I am adding numerical field on the y-axis, so that is our sales volume. So I am adding sales volume on a y-axis. So our line chart has created, you can see here. So as we have added date hierarchy, we can see the data drill action symbol here, to drill up, to drill down, to go to the next level, or to expand to the next level. If you do not want these options, what we can do? Just remove day, month and quarter. So for now, I am keeping just year from the date. Now, this is a simple line chart showing the sum of sales volume by year. Now, again, we can see here on the x-axis, each and every year is not getting displayed. So what we can do? Go to the format pane, make x-axis from continuous to the categorical. Okay, to make it visible, I am increasing the font size and I am changing the color. Similarly, we can do for the y-axis for the sales volume values. So, go to the values here, increase the font a little bit and changing the color. Now it is properly visible. So, it is a simple line chart. In this same line chart, we can have one more numerical field. Now it is showing sales volume by year, but what if I want average price by year? So I can add one more numerical field on a secondary y-axis. So for now, I am adding average price on a secondary y-axis. Now we can see two different lines. One line is showing sales volume by year and one line is showing average price by year. I can change its summarization. So I am making average price as a sum. Yes. So in the same line chart, in a single line chart, we can have the two functionality. Which two functionality? Sales volume by year and average price by year. For these two lines, two y-axis, our x-axis is common. Okay. But when we add two y-axis in the line chart, we cannot add a legend. Okay. Now to add a legend, I am removing this secondary y-axis by clicking here on the cross symbol. Now this is a line chart showing sales volume by year, but I want to see it for the 6 different region. For that, I am adding region name into the legend. So just click here on the region name and add it into the legend. Now, as before, we can see a legend has added here showing different color for the different region. And we can see here the 6 line for the 6 different region. So this is our line chart. Okay. By practicing any visual, please go to the format pane and see each and every option for the formatting. So you can see here, previously we have seen here as a columns when we have created the stack column chart visual. Now it is showing as a lines. So we can do formatting for any particular line also. Okay. One more option is there as a marker. Okay. Line, what is line chart? Line chart is nothing but the segment joining the markers. Okay. For example, यहाँ पे क्या होता है? ये क्या है मेरा? 1995 का सेल्स वॉल्यूम है, ये मेरा 1996 का है, ये मेरा 1997 का है. ओके, लाइक दिस वी कैन ऐड द लाइन सेगमेंट टू बिकम अ लाइन चार्ट. सो अगर हमें ईच एंड एवरी मार्कर जो है वो डिस्प्ले करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मार्कर को ऑन कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. फॉर पर्टिकुलर सीरीज वी कैन सिलेक्ट द सीरीज हियर, फॉर पर्टिकुलर एनी रीजन. देयर आर वन मल्टीपल ऑप्शन, वी कैन चेंज इट्स शेप, वी कैन चेंज इट्स कलर, साइज, वी कैन ऐड देयर द border. Okay, then data label, series label, we have seen before in the stack column chart visual. So for now, I am turning off the markers. Now I am converting same visual into the area chart visual. So just to select this visual and convert it into the area chart. This visual has now become an area chart. When the distance or the area between line and x-axis gets filled with the color, hatching or anything else, it becomes a area chart. Now it is showing the area for the particular region also. In the area chart, we can see area along with the lines.
So this is the area chart visual. But there is a one disadvantage for this visual. ठीक है, ये विजुअल का एक लिमिटेशन है, एक डिसएडवांटेज है. क्या है कि यहाँ पे एरिया जो है हर एक रीजन के लिए वो ओवरलैप हो रहे हैं. ठीक है, अभी जैसे कि ग्रेटर मैनचेस्टर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ग्रेटर मैनचेस्टर का एरिया कौन सा है, ये लाइन से लेकर एक्स एक्सिस तक. अगर हम लोग साउथ यॉर्कशायर कंसीडर करते हैं तो साउथ यॉर्कशायर का एरिया कौन सा होगा, ऑरेंज से लेकर एक्स एक्सिस तक. सो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो मल्टीपल रीजन के लिए ओवरलैप हो रहा है. ठीक है, सो ये है हमारा एरिया चार्ट, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि एरिया जो है वो ओवरलैपिंग हो रहा है. सो टू ओवरकम दिस एडवांटेज देयर इज वन मोर विजुअल व्हिच इज कॉल्ड एज स्टैक एरिया चार्ट. Like before we have seen stack column chart, now this is a stack area chart. Okay, now one color is corresponds to the one particular region. यहाँ पे एरिया जो है वो ओवरलैपिंग नहीं है. ठीक है, एक के ऊपर एक एरिया जो है यहाँ पे प्लॉट हो रहे हैं, स्टैक हो रहे हैं. वैल्यूज आर गेटिंग स्टैक ऑन टॉप ऑफ द ईच अदर. नाउ दिस हैज बिकम अ स्टैक एरिया चार्ट. एग्जैक्टली सेम विजुअल हम लोगों ने पहले देखा था, वहां पे वैल्यूज जो है वो स्टैक हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ कॉलम. Now values are getting stacked in the form of areas. So this is our stack area chart. Always see what formatting options are available for any particular visual. So previously we have seen lines, shade area. Now this is the shade area. Data label. At every marker, at every point, what is the sales volume? If you want to display, you can use the data label. Series label for showing the total sales volume. So this is our stack area chart. ये क्या बन गया अभी हमारा? ये हुआ है हमारा stack area chart. Okay. इसका ही और एक वेरिएशन है, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था 100% स्टैक कॉलम चार्ट हम लोग देख चुके हैं. वैसे ही यहाँ पे क्या है 100% स्टैक एरिया चार्ट. ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर द कंपैरिजन पर्पस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मार्कर्स का यूज करके, ये एरिया का यूज करके टू वैल्यूज जो है वो कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अभी जैसे कि ये क्या है, ईयर 1999 है. ठीक है, तो 1999 के अंदर ग्रेटर मैनचेस्टर का सेल्स वॉल्यूम कितना है, 24.29%. वो पर्टिकुलर ईयर में ग्रेटर मैनचेस्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 24.29%. If we move and come to the year 2000, so यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना है ग्रेटर मैनचेस्टर का 24.25%. एज कम्पेयर टू द 1999 टू ईयर 2000 में उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स वॉल्यूम के अंदर कम हो रहा है. सो इस तरह से कंपैरिजन करने के लिए हम लोग ये वाला विजुअल जो है वो यूज कर सकते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट द लाइन एंड एरिया चार्ट इन पावर BI डेस्कटॉप. टिल देन स्टे ट्यून्ड, like, comment, share and subscribe, and for any query, any doubts, please comment. Thank you.